सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HPPV-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N-204 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और
इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is low. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। Closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Cryo scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical scientific Stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान-3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा।
इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan-3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision-making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan-3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan-2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan-3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan-3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान-3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान-3 को LVM-3M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू। यानी अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत एकमात्र देश होगा, चौथा देश होगा जो चंद्रमा की सतह के ऊपर कदम रख पाएगा। और ये जिस शेप जो प्रोब है जिसकी चर्चा हो रही थी, बड़ा खास है ये, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री जो है हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी धरती जैसा कोई और ग्रह है क्या, इंफ्रारेड के जरिए चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर इसकी भी जांच होगी। और साथ ही पानी जो पता लगाया था चंद्रयान-1 ने, उसके बारे में और एक्सपेरिमेंट होंगे। धरती पर चंद्रमा की जमीन के ऊपर कितने और खनिज हैं, इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल प्रज्ञान करेगा। जी।
तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान-3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान-3 को प्रमोचन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan-3 satellite separated. चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan-3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan-3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission control, mission director. The LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान-3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. नमस्कार। Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Congratulations, India. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan-3 craft, the project director of Chandrayaan-3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards
enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and CE20 stage also is perfectly actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC. तो चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद आपको बता दें कि जो तमाम टीम है उनकी तरफ से बात रखी जा रही है, सुनिएगा आप. The small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries, and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud.
And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the... As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the
precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C-25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated. The system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the URO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. तो और इस वक्त ये 2 खूबसूरत तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये बता दें आपको, एक तरफ पेरिस में भारत का पराक्रम नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो घड़ी का इंतजार था 2:35 पर चंद्रयान-3 ने अपनी उड़ान भरी और ऐतिहासिक ये उड़ान सफल ये लॉन्चिंग रही। और ये बता दें अब संबोधन जो है फिलहाल यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मेहनत यहाँ पर इतनी ज्यादा थी और उसके बाद ये ऐतिहासिक उड़ान, ऐतिहासिक पल जो कि अब दर्ज हो जाएगा यहाँ पर इतिहास में। आपको ये भी बता दें कि पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार जो है वो चंद्रयान-3 ने ऐतिहासिक उड़ान जो है वो भर ली है। और ये खूबसूरत तस्वीर है नए भारत की, नई भारत लिखती हुई भारत की है। इस वक्त की बेहतर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बता दें आपको, जिस वक्त उड़ान यहां पर चंद्रयान भर रहा था 2:35 पर, तो सबकी सांसें थमी हुई थी कि 2019 का वो नजारा जो है एक बार फिर से सबको याद आ रहा था। लेकिन अब ये उड़ान जो है वो सफल हो गई है और 4 साल बाद इसरो ने उस अधूरे काम को पूरा किया है। मेहनत इस पर लगातार हुई और जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उत्तर प्रदेश की बेटी के हाथों में ही सौंपी गई थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बता दें आपको, इस वक्त ये 2 बड़ी खबर है आज की जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी पेरिस में, क्योंकि भारत की यहां पर एक अलग तस्वीर जो है देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ चंद्रयान की लॉन्चिंग जो है, सफल लॉन्चिंग जो है वो हो चुकी है। और अब आपको मौसम को लेकर भी हम अपडेट देते हैं कि किस तरीके से बारिश ने जो है हाहाकार मचाया हुआ है। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी। अवध के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, कुशीनगर, महाराजगंज में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, गोंडा, श्रावस्ती में भी अलर्ट है। बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर में अलर्ट है। पूर्वांचल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और तस्वीरें साफ ये बयां कर रही हैं कि किस लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। कैसी तस्वीरें फिलहाल प्रदेश में बनी हुई हैं। कुशीनगर, महाराजगंज में बारिश का अलर्ट है, पूर्वांचल में येलो अलर्ट जारी हो चुका है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी जो है वो यहाँ पर गलियों में बह रहा है। जहां पर कभी लोग चला करते थे वहां पर किश्तियां चलनी शुरू हो चुकी है, नाव के जरिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पैदल चलने का मार्ग बचा नहीं है, गाड़ियां यहां से जा नहीं सकती। घरों तक पानी जो है वो पहुंच चुका है, घर आधे आधे नीचे डूबे हुए हैं और इसीलिए येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जो है ये जारी किए जा रहे हैं। अवध के कई इलाके हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी भी बरसात जो है वहां पर होने की संभावनाएं हैं और इसीलिए अलर्ट जारी हुआ है। कुशीनगर, महाराजगंज, फिलहाल प्रशासन जो है वो अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। तो यमुना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यूपी में नदियों के किनारे बसे शहरों में अलर्ट है। वाराणसी, आगरा, कानपुर, कन्नौज में भी अलर्ट है। कई जिलों में बाढ़ चौकियों को सतर्क किया गया। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश से नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा हुआ है। लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, तो लोग घरों से शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों को शिफ्ट किया भी जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। खतरे का जो निशान है, पानी का जलस्तर उससे ऊपर आ चुका है। यमुना और गंगा अपना रौद्र रूप यहां पर दिखाती हुई नजर आ रही है। नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा ऊपर तक बढ़ चुका है और इसलिए आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो घर है, वहां पर बसे शहरों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। वाराणसी, आगरा, कानपुर, कन्नौज, तमाम जगह अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई जिलों में बाढ़ की आशंकाएं भी है, तो यहाँ पर चौकियों को भी सतर्क किया गया है कि यहाँ पर सतर्कता जो है वो बढ़ती जाए। कई जगह रिहायशी इलाकों में पानी जो है वो घुस चुका है और ऐसे में लोग जो है
उनको शिफ्ट करने का काम फिलहाल चल रहा है। नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वहां पर लोगों को फिलहाल सेफ जगह पहुंचाया जा रहा है। उधर सहारनपुर में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत शिविरों का जायजा भी लिया है। बाढ़ पीड़ितों के बीच सीएम ने खाद्य सामग्री भी बांटी है। सीएम योगी के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले और इसके साथ ही आलू आदि भी आपको उपलब्ध होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की है। उन्हें ये बताया है और जताया भी है कि आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सरकार लगातार काम कर रही है, हर मदद दी जाएगी। उधर फर्रुखाबाद में पानी ने कहर बरपाया हुआ है। पानी की कहर की चपेट में सरकारी विद्यालय हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग को 50 से ज्यादा विद्यालय को बंद करना पड़ा है। बात ऐसी नहीं है कि स्थिति यहाँ के लिए नहीं है। हर बार बारिश में अक्सर यही स्थितियां देखने को मिलती है और अभी तक समस्या के हल के लिए कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया गया है। तो ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और कमोबेश हर बार परिस्थितियां कुछ इसी तरीके की रहती है। जब पानी जो है वो पूरा भरा हुआ यहाँ पर नजर आता है, लेकिन बावजूद इसके हर बार की स्थिति जो है वो लगभग सेम ही रहती है। तो ये तस्वीर इस वक्त, और इस तस्वीर के माध्यम से आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो फिलहाल विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि विद्यालय में पानी भरा हुआ है। एक बच्चे को एक अध्यापक मोहित यादव करके हैं, उन्होंने बच्चे को एक डंडे से फोड़ कर दिया था, मार दिया था। उसमें जांच कराई गई है से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से। उनकी आख्या के आधार पर उनको निलंबित कर दिया गया। दूसरा एक मामला है मेरा सक्सेना करके एक अध्यापिका है प्राथमिक विद्यालय दनियापुर की मोहम्मदाबाद की। इनकी भी रिपोर्ट एवीएसए के माध्यम से मंगाई गई है। इनके लिए भी कार्रवाई की गई है। उधर मुजफ्फरनगर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। जनसाठ और सदर तहसील के खादर इलाके में बाढ़ आई है। तकरीबन 22 गांव जलमग्न है। पुरकाजी में सड़क बह गई है। इलाके का संपर्क टूट गया है। लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली से बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया है और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल भी जाना है। गांव के लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली या बुलडोजर की मदद से लाया जा रहा है। हालात को देख एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। 2 दर्जन गांव में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। फसल जलमग्न हो चुकी है। लोगों ने घरों की छत या ऊंचे इलाकों पर आसरा लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जलमग्न है गांव। यहाँ पर कई फीट पानी जो है वो भरा हुआ है। अब खबर नोएडा से है, जहां पर उफान पर यमुना नदी है। निचले इलाके जो है पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। 135 सेक्टर में गौशाला में गाय फंस चुकी है। 900 से ज्यादा गाय हैं जो कि यहां पर फंसी हुई हैं। प्राधिकरण की टीम गायों को निकालने में फिलहाल जुटी हुई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, इस तरीके से गाय जो है वो पानी में डूबी हुई है। तकरीबन 900 गाय बताई जा रही है, जो कि यहाँ पर गौवंश आश्रय जो बनाया गया था वहां पर चूंकि पानी भर चुका है, इस वजह से फंसी हुई है, जिनको निकालने की यहाँ पर से अब कोशिश शुरू हो चुकी है। पानी लगातार काफी ज्यादा यहाँ पर भर रहा है और देखिए किस तरीके से गौवंशों को यहाँ पर निकालने की जो पूरी कवायद है वो शुरू हो चुकी है। आधे आधे लोग जो है पानी में डूबे हुए हैं और ऐसे में गौवंशों को यहाँ पर सुरक्षित निकालना सबसे पहले मकसद इन लोगों का है और उन्हें सुरक्षित यहाँ पर से निकालने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।
बढ़ते आगे, चंद्रयान-3 को लीड करने वाली ऋतु करिधाल के परिवार में उत्साह बना हुआ। ऋतु करिधाल के भाई रोहित करिधाल ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक है और ऋतु करिधाल के घर पर हम मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं। तो उत्साह कितना? उत्साह जितना देश को उतना हमको। ऋतु के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ एक कहें कि बहन भी है आपकी, एक रिश्ता भी है। आज मन में क्या आ रहा है? यह है कि शुभकामनाएं हैं, सफल हों और मिशन आगे हों, भारत और तरक्की करे, इसरो आगे तरक्की करें। पूरे मिशन को वो लीड कर रही हैं। जी जी। तो अगर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी जो व्यवहार शैली है, हम जानना चाहेंगे कैसा था। जिस तरह से यहाँ पर पहले पढ़ाई उन्होंने की, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी रही, फिर वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर भी पीजी करने के बाद फिर तो क्या रहा? बहुत ही सिंपल और सरल स्वभाव की हैं। अपना पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही बहुत ज़्यादा थी। पढ़ाई, विज्ञान, अंतरिक्ष, इन सब में उनका शुरू से ही बहुत रुझान रहा है और ध्येय उनको अपना पता था कि मुझे करना क्या है, उसी ध्येय पे चलती रही। आज यहाँ चाँद को लेकर कितना लगाव था उनके मन में? कभी बातें को लेकर के बहुत लगाव था। अब स्पेसिफिकली चाँद तो नहीं कह सकता, हम लोग भी छोटे थे, बड़ी हैं हमसे, लेकिन हाँ अंतरिक्ष को लेके, साइंस को लेकर के बहुत लगाव रहा है। शुरू से साइंस साइड से ही रही हैं। फिजिक्स में फिर उन्होंने अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी किया, तो ये तो क्लियर था कि हाँ फिजिक्स और स्पेस में इनका रुझाव है। फिर जब इसरो में उनको मौका मिला तो उसको उन्होंने चूँकि हर एक विद्यार्थी है, चाहे जो भी होता है, चाँद को छूने की इच्छा रखता है। कभी बातें होती होंगी, कुछ कहा होगा कभी उन्होंने कि ऐसी चीज़ें एक दिन, एक जीवन में एक है कि वहाँ तक पहुँचे, और बहुत सारे पहले भी कोशिश। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये पहलू दूसरा होता है। जो आप कह रहे हैं ना, किसी की इच्छा होती है चाँद को छू लेना, चाँद बड़ा अच्छा है, ये है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनका। तो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे हम लोग की वैसी नॉर्मल बात नहीं होती है। हम लोग तो भाई बहन है, तो भाई बहनों में जो आपस में जिस तरह से बात होती है वैसी बात होती है, वैसी बात होती है। पढ़ाई लिखाई की यही बात होती है, बस यही सब चीज़ें हैं। अब इधर बीच बात हुई? हाँ, कल बात हुई थी। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, जा रही थी, शुभकामनाएं दी थी उनको कि ठीक है, ऑल द बेस्ट जी। और अब इंतज़ार? अब इंतज़ार है, बस 2:30 बजे देखें। तो उस क्षण का इंतज़ार है और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उत्साह का वातावरण है और देखना ये होगा कि जब ये उत्साह अपने चरम पर होता है तो क्या होता है। कैमरामैन राम बालक के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही।